Hello friends, welcome to Dr. Deepika channels and today I am going to discuss the topic protozoa. The classification of the protozoa it's on the basis of their motility, it's mean how they move and on the basis of the introduction. So it is classified into four types. First one is a flagellate, second one is a ciliates, third one is a sarcodina and fourth one is a sporozoites. So in the next slide, this is a basic classification of the protozoa, and in the previous slide we saw that there are four types of protozoans. Okay, so this is a phylum name and what is their common name, then on the basis of the locomotion, and these are the example. As we observe that in phylum Sarcodina, its a common name is Sarcodines, and they use pseudopodia for their locomotion, for their movement. For example is amoeba. Next one is a Celiophora. Its common name is a ciliates and it use cilia for their movement. Example is a paramecium. As you see that cilia is all over spread over the body of the paramecium. And next one is a Sarcomastigophora and its common name is the Zoophallagidates and it use flagella. Example is a Trypanosoma of Gigardia. As you seen that in the last of their structure, it have a very thick flagellum which help in the movement. Next and last one is the Epicomplexa. The name is a sporozoa. It's used sporodium and it's actually it's not very common, but it is used none in adult form. Example is a Plasmodium. It's very common in the malaria. What is the characteristics of the protozoa? Size. The size of protozoa is range from 1 micrometer to several millimeter, and generally the largest one animal which belong to the protozoa are the Genophytophores. It's a single cell foramina which cell can reach 20 centimeter in diameter. Next one is a habitat. Habitat where does protozoa survive or live? So, it is of two types. Sometimes it's available in the form of free living, or sometimes it is a parasitic. So the common one is the free living. It is easily available, or it is present abundant in fresh, brackish or salt water, but some other belong to the moist environment. It means it like to live in soils, in a moist soil. And some species which belong to the protozoa like to live in an extreme environment. They need maybe they need oxygen or they don't need oxygen, depends on the types. So for example, they like to live in hot spring, hypersaline lakes and lagoons. But it's a very common that all protozoa require a moist habitat. मतलब इनको एक नम वाली जगह चाहिए. But लेकिन कुछ जो होते हैं मतलब some can survive for a long period of a time in dry environment by forming resting cells that enable them to remain dormant until condition improves. मतलब ये कह रहे हैं कि मोस्टली जो प्रोटोजोआ होता है दे नीड अ मॉइस्ट हैबिटेट, मतलब उनको कुछ नमी वाली जगह चाहिए. लेकिन कुछ जो होते हैं वो ड्राई एनवायरनमेंट में भी रह लेते हैं, लेकिन वो ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते. उनको क्या होता है कि दे फॉर्म अ सिस्ट अराउंड देयर बॉडी, और इस सिस्ट की वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. और जैसे ही इनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है, मतलब एज दे गो इनटू द मॉइस्ट एनवायरनमेंट, तो वो अगेन अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं. नेक्स्ट वन इज दी मोटिलिटी. तो जनरली जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो मूवमेंट करने के लिए दे आर यूजिंग अ लोकोमोटरी मूवमेंट्स एंड और इन्हीं प्रोसेस को हम मोटिलिटी कहते हैं. और जनरली जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो जनरली एक्वस एनवायरनमेंट प्रेजेंट होते हैं या तो फिर वो सॉइल में होते हैं. तो जनरली कुछ जो प्रोटोजोअन्स है दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ द फ्लैजिलेट्स. मतलब ये कैसे मूव करते हैं, जस्ट लाइक ये मूव करते विद द हेल्प ऑफ वीप लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज नोन एज अ फ्लैजिला. सीलिएट्स में क्या होगा आप देखेंगे, दे यूज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज सीलिया. फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम में क्या होता है, ऑल ओवर बॉडी उनके सीलिया स्प्रेड होता है, और यही जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो पैरामीशियम को मूव करने में हेल्प करते हैं. अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है, आप इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे, pseudopodia मीन्स फॉल्स लेग.
एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ फूड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज अ सूडोपोडिया. मतलब ये इनका फॉल्स मूवमेंट होता है. कुछ जो होते हैं वो सेसिल होते हैं और कुछ में कोई मूव नहीं होता है. देन लास्ट वन इज़ अ पेलिकल. आप जैसे देखेंगे प्लांट, एल्गी या फंजी में, तो प्रोटोजोन्स में ऐसे कोई रिजिड सेल वॉल नहीं होते हैं, बट लेकिन ये एक दे है उनके साइड में एक इलास्टिक स्ट्रक्चर, एक मेम्ब्रेन होता है जो सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग पेलिकल्स कहते हैं. तो कुछ प्रोटोजोन में आप देखेंगे सीलिएट्स होता है. जैसे कुछ आप एग्जांपल देख लीजिएगा. द सेल इज सपोर्टेड बाय द कंपोजिट मेम्ब्रेन एनवेलप, दिस इज नोन एज अ पेलिकल. और ये जो पेलिकल होते हैं वो सेल को एक शेप देते हैं, और ख़ासकर तब जब वो लोकोमोट कर रहे हैं, मतलब जब वो मूवमेंट कर रहे हैं. तो जो पेलिकल होते हैं प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म के, ये जनरली फ्लेक्सिबल होते हैं और इलास्टिक के साथ साथ में ये रिजिड भी होते हैं. तो आप अगर सीलिएट्स और एपिकॉम्प्लेक्सा में अगर आप देखेंगे तो जो पेलिकल है वो पैक्ड होता है वेसिकल्स, पैक्ड वेसिकल्स में, तो और इसी को हम लोग एल्वियोलाई भी कहते हैं. आप ऐसे ही यूलेजिनेट्स में देखेंगे तो कुछ प्रोटीन की स्ट्रिप्स अरेंज होती है पूरी बॉडी में. Protozoans, all protozoans are holozoic in nature. It means their nutrition is holozoic. They need a organic material. They be available in the solid form or maybe in the solution form. For example, as we seen that amoeba engulf the solid particles and droplets with the mode of their mouth. They also perform a digestion and absorption in their food vacuoles. And they also have a property to eject their waste material. But in other protozoans, they also have a permanent mouth in the form of cystosome or microscope, where they ingest this all food in where they ingest all these foods and enclose inside the food vacuoles. And there is one more method. This is known as a pinocytosis, as name represent pino. It's mean that it's drink. So it is a process for the protozoans where they ingest nutrient material, whereby fluid is drawn through small temporary opening in the body walls. और यही जो ingested material होता है ये मेम्ब्रेन में जाके enclose हो जाता है और and form a food vacuoles. Protozoans also have some metabolic pathway as like the higher animals, and they require the same time of organic and inorganic compound. The resulting organism are free of various substances that are present in organism grown in complex media or isolated from a host, and which can interfere with immunologic or biochemical studies. Many protozoal drugs were available on the basis of their mechanism. We can block the metabolism of the parasites. Reproduction in protozoans. Simply, offsprings are generally produced from their parents, and this is a biological process in which a new individual organism are formed. So reproduction in protozoans are of two types. First one is a asexual and second one is a sexual method. So asexual, it is of 5 types, or it includes 5 types. First one is a binary fission, plasmatomy, multiple fission, budding and plasmogamy. Sexual reproduction in protozoa is of 2 types. First one is a syngamy and second one is a conjugation. In this slide, we discuss about the reproduction in protozoa by different types. In the asexual reproduction, the first process is binary fission. It is a division of one individual into 2 approximately equal parts. It is a very common method for reproduction in protozoa. It includes mitotic division of nucleus. It means that karyokinesis, which is immediately followed by the cytokinesis, and generally in ciliates means paramecium during fission make a nucleus divide amitotically and micronucleus usually by meiotic division as seen in the photo. Second one is the plasmatomy. It is a special type of fission
in which a multinucleate protozoans divide into two or more multinucleate daughter individual. For example, opilinids. This process occurs in the Pelomyxa and opalinids. That third one is the multiple fissions. What happened in the multiple fissions? In this, as we observe that in binary fission, karyokinesis process is followed by the cytokinesis. But in this, karyokinesis is not followed by the cytokinesis. So first, nucleus which is present in the protozoa, it undergoes a series of a division which resulted into the number of daughter nucleus, and they arrange themselves at the periphery. Periphery means at the end point. Then later on, the body cytoplasm divided into as many parts as there are daughter nuclei, which resulted into the formation of the several daughter individuals. For example, plasmodium. Then the next process is the budding. As name represents budding, it means there are formation of the some buds on the protozoa structure. So in this, new organisms are developed in the form of outgrowth or bud. It is a modified form of the fission. Generally, it is of two types. First one is a monotonic and second one is a multiple budding. So in monotonic, the example is the Verticella. So here the parental body produces only one type of bud. So it is known as a monotonic. But in multiple budding, we observe that there a parental body produce several buds simultaneously. And for example, it includes Ephyllota. Last one is the plasmogamy. It is a type of reproduction in which the cytoplasm of two or more paracells fuse together without fusing the nuclei. Then after separation, they remain unchanged, and it usually serves for the purpose of digestion or large prey. Next one is the sexual reproduction. It includes syngamy and conjugation. What is a syngamy? Syngamy generally, it's in this process fusion of the two gametes which resulting into the formation of the zygotes, and the fused nucleus of zygote is called as syncaron. It is of two types. First one is a hologamy. So in this type, two premature protozoans individual do not form gametes, but they behave like a gametes fused together to form a zygote. Example is the Copromonas. Next one is the isogamy. Isogamy में क्या होता है? इसमें दो जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं, ये अगर आप मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो ये एकदम सिमिलर होते हैं, बट देयर बिहेवियर आर डिफरेंट एंड दे आर नोन एज अ आइसोगैमेट्स. और जो इनका यूनियन होता है इसको हम लोग आइसोगैमी कहते हैं. जो आइसोगैमेट्स होते हैं ये जनरली फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द मल्टीपल फ्यूजन. इसमें एग्जांपल है मोनोसाइटोसिस. लास्ट वन इज द कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशंस को हम लोग एमपी मिक्सिस भी इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ एमपी मिक्सिस. और इस प्रोसेस को जिसने डिस्कवर किया था ही इज़ अ एडवर्ड टैटम इन 1946. तो इसमें क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स का टेम्पररी यूनियन होता है जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट. और जनरली जो कंजुगेशन का प्रोसेस होता है वो सेम ग्रुप के इंडिविजुअल के बीच में ही होता है. और जो ऑर्गेनिज्म इसमें पार्ट लेते हैं कंजुगेशन के प्रोसेस में, दे आर नोन एज अ कॉन्जुगेट्स. Thanks for watching with this video, and if you like this video, please subscribe the channel for watching more video.